Okay, so when you open this Power BI desktop in your system, तो सबसे पहले जो आपका विंडो दिखेगा, दिस वुड बी द फर्स्ट विंडो, राइट। यदि आपके पास डेटा है ऑलरेडी, यदि एक्सेल में डेटा सोर्स है या फिर किसी एसक्यूएल के अंदर है, फ्रॉम देयर वी कैन जस्ट पिक डेटा एंड देन वी कैन क्रिएट द विजुअलाइजेशन आफ्टर जस्ट डूइंग द डेटा मॉडलिंग एंड ऑल, राइट। यदि मल्टीपल डेटा सोर्स से हम डेटा को पिक कर रहे हैं, देन ऑल्सो वी नीड टू क्रिएट द रिलेशनशिप एंड ऑल, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास थ्री थ्री टैब्स है, राइट। फर्स्ट वन इज द रिपोर्ट व्यू, सेकेंड वन इज टेबल व्यू, जो सेम डेटा आप लोड करोगे उसका टेबलर व्यू हमें दिखेगा। देन थर्ड वन इज द मॉडल व्यू। यदि मल्टीपल डेटा सोर्सेस है, मल्टीपल टेबल्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं अपने डेटा के, अपने इस पावर बीआई के अंदर, then there we just need to create the relationship so that we can use all those together, right? Now here we have again DAX query view 2, right? यदि हमें DAX query run करके check करना है, then this is also, so this is something new, right? इसको देखना आप आपके सिस्टम, आपने जो पावर बीआई डेस्कटॉप इंस्टॉल किया है उसमें ये वाला व्यू है या नहीं है। Now, so this would be the first page when आप फर्स्ट टाइम लॉन्च करोगे डेस्कटॉप को, राइट। सो पावर बीआई ऑल्सो, यदि आपके पास डेटा सोर्स है देन इट्स फाइन, यदि नहीं है देन फॉर लर्निंग पर्पस पावर बीआई ऑल्सो प्रोवाइड सम सिंपल डेटा, राइट। सो यदि हम पावर बीआई का जो ऑलरेडी डेटा है उसी को यदि हमें यूज करना है फॉर वर्किंग और पर्पस, देन वी कैन यूज दैट टू, राइट। सो हियर वी हैव द यूज सैंपल डेटा, इसमें जाएंगे, देन आई क्लिक हियर and this will provide you a financial model data here, right? So here we have the sample data, right? I'll just click load sample data here, right? So I'll click here and then this will allow you to load the sample data here, right? So this will take some time and then this will connect internally. अब हमें कहीं external data नहीं ले रहे हैं, पावर बीआई में ऑलरेडी जो इनबिल्ट डेटा है फॉर लर्निंग पर्पस, इसने एक डेटा ऑलरेडी इसमें डाला हुआ है, सो दैट यदि आपके पास कोई डेटा नहीं है फॉर प्रैक्टिस पर्पस, देन इवन यू कैन जस्ट लिवरेज दैट एंड यू कैन जस्ट start practicing, right? So here we have the data, right? I am just going to use this financial data here, right? I'll select this and then I'll load this. ये transform करेंगे, then this will again go to Power Query section here, right? But for now, I'm just going to load this. इसको हमने load कर लिया, right? After loading this, सर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेटा क्या करता है? ट्रांसफॉर्म में डेटा, जब हमें डेटा पे कुछ चेंजेस करना हो, राइट, कंप्यूटेड कॉलम क्रिएट करना तो हो, सर सो वो जो ETL, चेंजेस होगा वो पूरा पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा? right, right. So in Power BI, there are two view, right? First one is Power Query. Power Query के अंदर हम क्या करते हैं? Power Query के अंदर we परफॉर्म द ETL एक्टिविटी, यानी कि डेटा के अंदर जो क्लीन अप करना है, राइट, डेटा की मॉडलिंग, डेटा का जो शेप में लाना है, डिफरेंट टेबल्स क्रिएट करने हैं, मल्टीपल टेबल्स क्रिएट करने हैं या फिर मर्ज करना है, सो ऑल दीज एक्टिविटी वी डू इन पावर क्वेरी module here, right? So this is your Power Pivot module, right? This is Power Views. We can just say that this is the view where we are just creating the visualization on, or also we are performing the data modeling activity. Now let me just show you the Power Query also. ये जो sample data है यहाँ पे load हो गया है. I'll just go to, so just come here and then transform data है tab command. Just click on transform data, right? And then this will just navigate you to Power Query module here, right? So I'll just click on this and now here we are in Power Query module, right? यहाँ पे आप क्या करते हैं, हम different data sources से डेटा को लोड करते हैं, right? And then यदि हमें उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, right? We are doing here, right? And जो भी आप मॉडिफिकेशन परफॉर्म करते हो, all the steps are being recorded here. So here even we can just remove the row, right? We can just change the data type of any column, right? From here, or what we can do, even we can just create extra column यदि हमें create करना है, then even we can do that too, right? So these things we can do here, right? ये जो टेबल, ये जो मॉड्यूल है पावर क्वेरी मॉड्यूल, देयर वी कैन जस्ट डू दिस, एंड ये वाला मॉड्यूल आपको एक्सेल के अंदर भी मिलेगा, राइट? There even you can just get data from multiple data sources and then you can just perform
द सेम एक्टिविटी जो हम यहाँ पे पावर बीआई में करते हैं, राइट। सिमिलरली डेक्स फंक्शन का भी पावर पाइवट हमने एक्सेल में भी किया था। सो वहां पे भी जिस तरीके से हम डेक्स फंक्शन का यूज करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, सो ऑल दीज वी कैन जस्ट डू इन पावर बीआई। जैसे एक्सेल में किया था इस तरह से हम पावर बीआई में भी कर सकते हैं। एक्सेल में हमने ओनली जो मैंने यदि करवाया होगा, देन ओनली मैंने एक या दो आपको डेक्स फंक्शन करवाए थे एक्सेल के बोल अंदर, देते दैट ना इज भाई, रिलेटेड हाँ वन। ये जल्दी कवर हो जाने फिर। ओके, सो एक्सेल में जो मैंने आपको करवाया होगा, तो देयर आई जस्ट पिक द वन और टू डेक्स फंक्शन, राइट, दैट वाज रिलेटेड सम, राइट, एवरेज एंड ऑल, ये सारे मैंने यूज किए होंगे। बट हियर विल लर्न मोर, राइट, बिकॉज पावर बीआई में और भी बहुत सारे डेक्स फंक्शन हैं दैट वी कैन जस्ट यूज फॉर आवर रिक्वायरमेंट, राइट। सो दिस इज सम मॉड्यूल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डेटा की मॉडलिंग करते हैं, राइट। सपोज यदि हमें स्प्लिट करना है डेटा, कहीं पे क्लीन अप करना है, कुछ रिप्लेस करना है, जैसे लास्ट क्लास में हमने किया था, सो इवन वी कैन जस्ट डू दैट। बट बिकॉज दिस इज सिंपल डेटा, सो ऑलरेडी ये क्लीन डेटा है, एंड दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस, राइट। सो we are not going to do any modification in it. I'll go on power view here, right? And यहाँ पे अब हम simple visualization create करेंगे, right? So I'll go to data view, table view here. I'll click on this, and then here we'll see that कि data मेरा क्या क्या है इसमें, right? So here we have data for sales and all, right? Sales, cost and all. इसमें हमने click किया. Now here we have all the data. So this is the segment one. Second one is country, right? Country level data we have here. Then next here we have product, then discount band, right? So here we have different discount band also, right? High, low, medium and none, right? So even we can just create the visualization as per this data, right? जब भी हम कोई भी विजुलाइजेशन क्रिएट करते हैं, जब भी एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, तो उसका स्टेप से ही होगा कि सबसे पहले हमें डेटा को देखना है कि इसमें कौन कौन से केपीआईज हैं, राइट। क्या क्या हम किस तरीके के हम व्यूज क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके हम ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं, सो दैट दैट वुड बी यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग वन। अब ये जो डेटा है, फाइनेंशियल का डेटा है हमारे पास, यहाँ पे डिफरेंट सेगमेंट है। तो सेगमेंट में हम देखेंगे क्या क्या यूनिक आइटम है, राइट। हियर वी हैव डिफरेंट unique item available here. So what we can do, we can just create a chart to show segment wise, right? Segment wise gross sales, right? So even we can just show the same segment wise gross sales and all. Just a minute, guys. Sir, your voice is not audible. Sir, you are not audible. Hello, guys. Just a minute. एक call ले रहा हूँ बस. Just a minute. Yeah. Okay, sir. ओके, सो व्हाट विल डू, राइट। अभी इसमें क्या है कि अभी हमने ये, बिकॉज दिस इज सैंपल डेटा, सो दिस इज ऑलरेडी क्लीन्ड है, राइट। तो अब इसमें कोई क्लीन अप नहीं करना है. वी आर इन डायरेक्ट इन डेटा व्यू हियर, राइट। अब यहाँ पे ये आपको फंक्शनलिटी देता है, राइट। यहाँ यहाँ पे हम यहाँ पे इसकी एनालिसिस कर सकते हैं कि
डेटा क्या है एंड व्हाट काइंड ऑफ व्यू वी कैन क्रिएट हियर, राइट? सो सपोज हियर सेगमेंट है, यहाँ पे सेगमेंट यहाँ पे दिख रहा है हमें एक item, and then next here we have sales and all, right? So what we can do, we can just create a segment wise gross sales और total sales, we can just do that, या फिर segment wise and profit हम यहाँ पे देख सकते हैं, right? We can just create the same kind of chart here, right? So and also here we have something that is country है, then different segment and all, right? So again here even we can just create the high level report, and then फिर उसको हम drill भी कर सकते हैं on different country level, right? So so what I'll do, I'll just go in this view, and अब आप मुझे कोई एक anyone can volunteer here, right? And एक हमें chart create करना है as for segment and gross sales का। तो कौन सा चार्ट हमारे लिए सही रहेगा for visualization point of view, right? कौन सा चार्ट पिक करें हम? बार Bar चार्ट, chart, कॉलम sir. चार्ट, एरिया चार्ट? Bar chart. Bar chart. Okay, so either we can just use a stack or column chart. Here we have the clustered bar chart. So for now I'm just going to pick the clustered bar chart, right? जैसे आपने बोला, I'll just pick that. फिर हमने अब यहाँ पे जैसे बार चार्ट क्रिएट करते हैं, राइट? सो हियर वी हैव ऑप्शन, जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया, नाउ हियर वी हैव वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में क्या वैल्यू डालना है, इसमें यदि हमें मल्टीपल आइटम्स से इसको स्लाइस करना है, देन हियर अगेन वी हैव लेजेंड्स एंड ऑल, राइट? देन टूल टिप में यदि हमें कुछ और इसमें ऐड करना है, देन इवन वी कैन जस्ट ऐड मोर आइटम इन टूल टिप 2 हियर, राइट? So for now, I'm just going to add simple. हमने sales सब show करना है. So I'll just click here sales, right? So total sales. जैसे हमने यहाँ पे sales add किया, now here you can see this is just adding here the total sum of that sales, right? Then इसे हमें change करना है multiple different items में, right? So for that I'll add here, either we can use segment. So segment का हमने देखा था, so I'll just click on segment here, and now this will be added in y-axis here, right? And now the chart is populated here. आपने bar chart create करवाया, and now bar chart is created for you, right? अब हमें इसमें इसको भी यदि हमें कलर करना है, right? I just wanted to see the different items. So here we have one more item, country यदि लेते हैं, then this is something big. इसका सही नहीं आएगा, month, date, discount band, right? So here we have discount band. अब हम इसको discount band के basis पे we can just add here legend, and we can see that ये जो different segment है उसमें जो total sales जो निकल के आया है उसका different discount band क्या था. So I'll just click on discount band, and then this will be added here legend, and now here we have different item. अब इसको slice कर दिया on the basis of all the discount band we have selected here, right? So here we had 3 discount band, and now we can see this is high one, this one is the low, and this is something medium, and this is the none here. And also इसका color भी यहाँ पे हमें दिख रहा है. Now what I'll do, I'll just add one more. So this was the sales. इस sales का information हमें दे रहा है. Now I'll just make this a little bit smaller here, and then I'll add one more chart here, right? हमने यहाँ पे segment wise, right? I'm just going to create a segment wise profit, right? So I'll just go and then select the segment here again, and then हम segment wise profit इसमें show करेंगे. So here we'll see that what percentage of profit we are getting from different segment here, right? So here हमने इसके लिए हमने यहाँ पे एक pie chart create कर लिया. Now here we have color scheme or legend for all these, right? Now अब so here we have another chart. हमने दूसरा chart भी create कर लिया. I'll just click on this, right? हमने एक certain segment पे click किया. Now this is just filtering out this chart also in the same dashboard, right?
सो इसका जो इंटरेक्शन है, राइट, दिस इज इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, बट व्हाट आई वांट दैट इसके क्लिक करने पे इसमें कोई भी इंटरेक्शन ना हो, राइट। सो इसको हम कैसे एडिट करेंगे? एनीवन? इंटरेक्टिविटी जो इसकी है, जो आपस में दोनों इंटरेक्ट कर रहा है, हाउ विल जस्ट एडिट इट्स इंटरेक्शन? View. I think we need to go to format. कहाँ पे? yes I'll just click this, then कहाँ पे जाना है हमें? Format. फॉर्मेट, ओके, Edit interaction. गुड, राइट। सो गाइस ये कितने लोगों को क्लियर है आप लोगों में से? दीपिका, अच्छा आपने तो अभी किया ही नहीं है, राइट। गजल, आपको क्लियर था ये? इसी तरीके से यूज करते हैं एडिट इंटरेक्शन? यस सर। अब प्रियंका, आपने प्रैक्टिस किया था थोड़ा बहुत पावर बीआई में? संध्या, हरिओम, गाइस थोड़ा थोड़ा जो है ना हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट, तभी इसमें। सो पावर बीआई इज नॉट सो टफ, राइट, जितना कि दूसरा टूल है। जितना हमें एक्सेल में जितना टफ हमें कभी कभी लगता है, उतना ज्यादा टफ आपका पावर बीआई या टैबलू नहीं है, राइट। दीज आर वेरी ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप टूल्स, राइट। इसमें थोड़ा सा हम लॉजिक लगाते हैं, देन वी गेट गुड थिंग्स, राइट। सो इसमें क्या है कि इसमें फीचर है, यदि हम पावर बीआई के अंदर हम सेम सीट पे मल्टीपल चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल रिपोर्ट्स इवन वी कैन जस्ट क्रिएट। सपोज हमने यहाँ पे पिक किया एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ टेबुलर रिपोर्ट हियर, सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड नाउ हियर वी हैव अ टेबल एंड इसमें हम मल्टीपल चीजें डाल सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे बोला सेगमेंट, देन आई जस्ट यूज द कंट्री इन्फॉर्मेशन ऑल्सो फॉर एंड डिफरेंट जो कंट्रीज में इसका सेगमेंट है, वी आर जस्ट सीइंग दैट। फिर हम इसमें इसका सेल्स देख सकते हैं, इसका प्रॉफिट देख सकते हैं, राइट। सो वी कैन ऐड दीज फील्ड्स हियर, राइट। हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। नाउ अगेन इफ आई जस्ट क्लिक ऑन दिस, एक सर्टेन सेगमेंट को हम चूज करते हैं एंड देन इसको भी फिल्टर ही कर दे रहा है, राइट। सो व्हाट आई वांट दैट इसमें हम जिसको फिल्टर करने के लिए, जिसका इंटरेक्शन हम जिस चार्ट को बोल रहे हैं इंटरेक्ट करने के लिए विद ईच अदर, ओनली वही चार्ट इंटरेक्ट करे, दूसरा इंटरेक्ट ना करे, राइट। सो फॉर दैट what we'll do here, we'll go and then edit the interaction one, right? I'll just go on format and then format में जाके I'll just click on edit interaction, right? And जैसे आप edit interaction करते हो, ये वाला जो साइन है यहाँ पे दिख जाएगा चार्ट के ऊपर, right? This is something, यदि हमें फिल्टर करना है तो फिल्टर, यदि हमें इसको नन करना है then none, right? So in this way even we can just apply the edit interaction one, right? So suppose now we have just select this one, then यहाँ पे आ रहा है, I'll just go and then I'll select none here, right, and that's it. Again I'll just go on this and then select none here and that's it. Now just click on this, हमने click किया and there are no change in it, but इसमें अभी भी change हो रहा है because ये इसके साथ interact कर रहा है, right? So I'll just click here again and then I'll do one more thing, I'll just click on none and then that's it. अब हम इस पे क्लिक करेंगे, then there are no interaction between this, there are no change, right? सिर्फ इसी का highlight हो रहा है या फिर dim हो रहा है। Now this is not interacting with this, यहाँ पे हमने none select किया हुआ है, so that's why there are no change in it. But अब हमने इसके साथ इंटरेक्शन को एडिट किया है। सपोज here we have the this is the chart, right, and I'll click on this, right, this item. So because इसमें हमने अभी कोई भी एडिट इंटरेक्शन का जो ऑप्शन था उसको हमने हाईलाइट नहीं किया था, दैट्स वाई जब इस चार्ट को हम क्लिक करते हैं इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बट ये जो पाई चार्ट है इसमें चेंजेस हो रहा है, राइट। I'll just click on this again. Then similarly if I'll just click on this certain item, then in this way what will happen, ये दोनों चार्ट इसके जो हमने टेबल रिपोर्ट बनाया है उस पे जब हम एक सर्टेन आइटम को सिलेक्ट करते हैं, then this is just filtering these two chart also, right? So in the same way what we can do again, इस वाले चार्ट के लिए भी हम इंटरेक्शन को एडिट कर सकते हैं। I just click here none and then इसमें भी हम none कर देंगे। Then if I just click here then there would be no impact on this. Similarly
जब आप इसको सिलेक्ट किया है आपने, so in that case again here you will go and then either you can apply here the highlight, or suppose यदि हमें filtered result देखना है, in that case even we can just do that too. यदि हमें कोई interaction नहीं करना है, then we will select none. But suppose instead of highlight I just wanted to see the filtered result, so in that case here we'll just select the filter and then that's it. Now just click on this and this will just work as a filter here, because यहाँ पे single item हम select कर रहे हैं, segment is a single one, so that's why here we are just seeing the single right arrow here. But if I just remove this, I'll just go here, I'll say none, then there would be no change when we select or click on any line on this, right? So in this way हम Power BI के अंदर एक ही कैनवास पे मल्टीबार चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, एंड देन इवन वी कैन जस्ट एडिट द इंटरेक्शन सो दैट जब यूजर किसी भी चार्ट पे क्लिक करता है, सर्टेन आइटम पे क्लिक करता है, देन कोई जो दूसरा चार्ट यहाँ पे है उस पे कोई इम्पैक्ट ना हो, राइट? सो इट कैन बी डन हियर. नेक्स्ट पार्ट हियर व्हाट आई विल डू, अब हमने एक सिंपल सा चार्ट यहाँ पे क्रिएट किया था. सिमिलरली आई विल गो एंड देन आई विल क्रिएट अदर चार्ट, राइट? So here I just wanted to show the country level sales, country level profit here. So I'll just go and then click here country, right? And then I'll just show here the profit one, right? So profit को हमने यहाँ पे bubble में डाल दिया, right? So here we have the country information, right? यहाँ पे different country का information है हमारे पास. I'll just create this on map chart here. एंड यहाँ पे जो डिफरेंट कंट्रीज है वहां पे जो प्रॉफिट है एज पर दैट हियर वी आर सीइंग द बबल इन इट, राइट? अब ये जो यहाँ पे let me just adjust this. This is the map chart, right? So I'll just adjust this. Now what I want, अब हम ये चाहते हैं कि जो डिफरेंट बबल्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट? इस पे जब यूजर क्लिक करे, राइट, देन दिस विल अलाउ, देन आई जस्ट वांटेड टू सी द समरी रिपोर्ट ऑफ दिस, राइट? इस कंट्री का टोटल कितना टोटल सेल्स है, प्रॉफिट एंड ऑल, राइट? ऑल्सो बाय सेगमेंट वाइज, राइट? अभी इसमें क्या है, सेगमेंट हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट आई जस्ट वांटेड टू सी एक सर्टेन बबल है, उस पर हम क्लिक करेंगे एंड देन विल गो in other page. I just see the detail of this one, right? So for that, what I'll do, I'll just use the drill through feature of Power BI. So for that, I'll go in next page, right? And then here I'll create a simple first report, right? So detail report हमें इसके क्लिक पे जो बनाना है उसको पहले हम यहाँ पे जाके क्लिक क्रिएट कर लेंगे. So detail report I just wanted to show that is tabular view, and tabular view में हम segment रखेंगे. Then I'll just pick the country here, right? And then I'll use profit. Also I just wanted to show the sales too, right? So these all information I've just added in this table here, right? अब हम चाहते हैं कि जब यहाँ पे यूजर क्लिक करे, राइट, सो दिस शुड शो द ड्रिल थ्रू ऑप्शन, राइट? जब भी इस पे क्लिक करे यूजर, देन इट वुड बी जस्ट नेविगेट टू समवेयर एल्स, राइट? इसका जो समरी है हम इस पे क्लिक करके एंड देन वी कैन जस्ट इवन सी द समरी ऑफ दिस, राइट? सो फॉर दैट आई विल गो एंड देन ऐड द ड्रिल थ्रू हियर, राइट? आई जस्ट क्लिक ऑन दिस ड्रिल थ्रू एंड देन आई विल गो टू दिस सीट एंड यहाँ पे हम ऐड कर देंगे कंट्री इन drill through, right? So country को pick करके and then I'll just pass this in drill through here. I'll move this. Now this country is added. जैसे हमने इसको country को यहाँ पे add किया, now you can see that here we are just seeing a button, right? So I'll just click on this button and then this will navigate us to this page. Now the drill through is added. Now I'll again click on this, right click on this, and now here we have the drill through option. Drill through में ये already आपको पेज 3 से, because हमने यहाँ पे जो इसका drill through लगाया है on पेज 3 पे लगाया है, so that's why here we are just seeing the reference of page 3. I'll just click on this and now here you can see it has just filtered the information for Canada country, right? Again I'll
click on back, and again I'll go and here, and then again I'll click on drill through page 3, and now here we can see now this is just showing the information for United States, right? So in this way, what we can do from other page to next page, we can just apply the drill through, and drill through का use करके we can just see the filtered or detailed report from one visualization to other visualization. Any question here? drill through से किस तरीके से हम drill through इसमें ऐड करते हैं? सिंपल था। हेलो गाइज, आप लोग की आवाज नहीं आ रही। हाँ सर। नंद सही था ये नंदा कुमार जी? या इस बार सर। it was easy. Yeah, it was easy sir. Okay. So इसमें जो Power BI के अंदर see, so that's why I'm just saying that learning Power BI, Tableau or any visualization tool is not so tough. But थोड़ा सा हमें क्या करना है? Just we'll have to use our create our creativity, and we'll have to just explore the different features available in it, right? एंड ये आपके पास टूल ऑलरेडी है, सो इवन यू कैन जस्ट एक्सप्लोर दिस, राइट? इसको देख सकते हो कि किस तरीके से वर्क करता है, डिफरेंट आइटम्स है इसके, डिफरेंट इसके जो टूल्स डिफरेंट कमांड्स है, हाउ दिस वर्क्स एंड ऑल, राइट? सो इवन पावर बीआई व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट ऐड द टेक्स्ट बॉक्स आल्सो, राइट? टेक्स्ट बॉक्स भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। नाउ द गुड फीचर ऑफ पावर बीआई इज आल्सो देयर इज query on, right? So even we can just insert a question, right? Question Q&A here, right? So if I just click on this, and then this will insert here a Q&A. अब ये Q&A क्या है कि this is very good feature of Power BI. Automatically यदि हम कोई data question है हमारे पास, if we'll ask here, then this will answer the data question. Suppose I just wanted to know the count of product, total count of product here, right? So I'll click on this, and then I'll just enter here, and then this will just give you the output here, right? So their total product is 6. Count of total product is 6 here only. So in this data set, we have only total 6 product that is being sold. Similarly, यदि हमें इसमें कुछ और शो करना है, कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास, then we can just ask that. Suppose total sales. I just wanted to know that total sales, right? I'll just click here, and now this will just give us the total sales information, right? इसी तरीके से Q&A एक ऐसा फीचर है जहां पे आपको जो भी आप डेटा का क्वेश्चन पूछोगे, जो भी आपने विजुअलाइजेशन क्रिएट किया, जो लोड किया है इस मॉडल में, एंड इफ यू जस्ट आस्क एनी डेटा क्वेश्चन, देन दिस विल आंसर यू अकॉर्डिंगली, राइट? दिस इज समथिंग अ वेरी स्मार्ट टूल, राइट? सिमिलरली यदि हमें इसमें एवरेज सेल्स देखना है, राइट, सो इवन वी कैन जस्ट गेट द एवरेज सेल्स। यदि हमें सेगमेंट वाइज सेल्स देखना है, सेगमेंट sales. Sir, the result is showing for the country wise, right? No, sir. It's total or It's particular total, country? right? It's total. It's total. It's Sum not of for sales, right? It's okay, sum total, of right? So let me just show you. अब इसमें भी confusion यदि ना हो, so for that what I'll do, I'll just create a simple. Let me just make this, right? So what I'll do, I'll just create here a big data card here, right? So I just click on this, and then I'll create a big data card. Big data card पे क्या है कि हम aggregated value show करते हैं generally, right? So when Yeah. we'll have to show the total number, total sales, total profit and all. So we just show that on a big data card here. I'll just click, and then I'll select a total sales here. I'll just go and then click on sales. Now here, see, इसने return क्या किया है? It has returned the total sales. Data के अंदर जो था उसी के according. Similarly, if I'll have to get the total profit, so I'll just pick this, and then here I'll create another big data card, and then I'll just add here the total profit also, right? Similarly, यदि हमें total के साथ, अब इसमें जब भी आप ऐड करोगे, then this will always aggregate this with sum by default. But यदि हमें average लेना है, I'll just change this, right? So in that case, here we have option when we can just do that too. Either we can just get the sum, average, minimum, maximum, count distinct, right? So even we can just get as per these, right? Suppose if just wanted to get the average
profit, right? So even we can just do that too, right? अब यदि हमें यहाँ पे ये देखना है कि I just wanted to get the segment wise sales, right? Segment by sales. So here we have the chart. इसने खुद ही चार्ट क्रिएट करके हमें दे दिया. डिफरेंट सेगमेंट में टोटल सेल्स कितने हैं. हियर इट इज जस्ट शोइंग. क्वेश्चन आंसर में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डेटा क्वेश्चन, आफ्टर जस्ट लोडिंग दिस, एंड here it is just giving us answer, right? So even this can be used यदि हम कोई चार्ट क्रिएट कर रहे हैं and there are some data question, right? So even we can just create this Q&A as a visualization somewhere, and we can ask user to put his data question, and then this will just return the same here, right? So in this way even we can just do that. Now I just wanted to know that ये जो यहाँ पे dotted line दिख रहा है इसमें, right? So what I want, I just wanted to remove this. क्या हम इसको remove कर सकते हैं? ये जो dotted line guys दिख रहा है, क्या ये remove हो सकता है? Yeah, need to visualization the second one. So visualization, here we have the build visual, and then next here we have the Yeah. format your visuals. So I just Yes. click on this, and then फिर हम कहाँ जाएंगे? And then go to general. So and then I'll go to general here. So first I'll just click on this, not on this. So here we have the second part, format your report page, right? Yes. So when you Yeah. select a visual, then this will just allow you to format the visual one, right? This one. Yeah. But because my requirement is to format this report page, right? So Correct. for that, I'll just click somewhere else, and then I'll go to format your report page. I'll click on this, and then we'll go to report page. Canvas. Here we have option to set this, right? So page information, if we'll have to set the page information, then we can just set this, right? Allow Q question answer, right? So even we can just do that. If we don't want that, then even we can don't do that. Next, here we have the canvas setting. So here we have the canvas background and all. Even we can just set that height हमें जो देना है उसके according we can just set. Next, here we have canvas background, right? So by default इसका जो color होता है that is being white, right? But हम अपने according इसके canvas का color set कर सकते हैं as per our company color scheme, right? We can just give its color, background color here, right? Then next the transparency here, right? इसको अब हमें ये वाला जो color है, ये वाला जो line है, we just wanted to remove that. So for that I'll just go here and then I'll change its. Now जैसे हमने इसको change किया, now you can see that हमने इसका transparency 0 कर दिया, right? Now this is removed here, and also it has just applied the background में जो हमने color यहाँ पे apply किया था, that is applied here, right? एंड उसी के जो बैकग्राउंड में कलर होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें जो उसके फ्रंट पे जो हम आगे विजुअल क्रिएट कर रहे हैं, विल हैव टू सेट दैट सो दैट इवन दिस कैन लुक गुड, राइट? यानी कि ये सारे को सेटअप है वी कैन जस्ट डू बिफोर क्रिएटिंग और डेवलपिंग एनी स्टैंडर्ड डैशबोर्ड. So I'll just adjust this page. Q&A को भी हम रखते हैं अपने इस पे. Then I'll keep this, right? And here we have the value. So in this way we can just create, right? Set up the canvas also, right? अब ये जो visuals है, अब ये आपने canvas की setting कर ली, right? So this is something that you have just created canvas and उसका background अपने color दे दिया. Now अब हमारे जो individual visuals हैं, now again we can just format that individual visuals also, right? So here we have the visual. Now I'll just go here and then I'll click on this first. Then here we have option to format this. Now here we have option to even just format this all, right? So call out value. Again here we have the different things available, right? So even we can just set this and all.
right? So even we can just do this from here, right? नेक्स्ट इसी में ऑप्शन है दैट इज जनरल ऑप्शन, राइट? सो जनरल ऑप्शन में हमारे पास डिफरेंट इसके इफेक्ट है, राइट? टूल टिप एंड ऑल, इवन वी कैन जस्ट do that. Header हमें रखना है, then we'll keep this header. Also we can just perform the formatting of the header also, right? Then effect, here we have different effect. यदि इसको हमें background color में कुछ रखना है, then I'll keep the background color. Suppose I'm just going to add this background color for this. So now here we have the background color of this, and also I'll just go here, then I'll add the background color for this too. So here we have the background color. Question answer है, इसके लिए भी हम background color रखते हैं. I'll just keep go and then change its color to this one. So in this visual we have the background color of this is all, right? Again I'll go here and then this is a map here. So map का भी यदि हमें कुछ change करना है, then even we can just do that. So by default map will be, right, populated in this way, in this color. So I'll just select this map, then here we have option to even format the map too. So here we have the map thing, right? So here the style is road, but if we want to change this, then we have option to change this. I'll click on this and then now this will shown like Arial one, right? Arial map. So यदि हमें फिर इसमें भी change करना है, then I just wanted to show the dark one. So now here we have the dark view of map here. Then light one. So here we have the lighter map option. Then gray style, and here we have the gray style map. So as per our requirement and as per our choice, even we can just choose a map, right? Map type from here. For now, I'll just keep this as Arial. Then I'll just go here and here I'm just going to use the auto zoom option available here, right? So I just wanted to add here the zoom button here on the map, right? So that user can just zoom in and zoom out, right? So here we have a zoom out option, right? So either user can zoom out this or zoom in these, right? So I'll just add here a zoom button. Then next here we have lasso button too, right? So यदि हमें इसमें कुछ इस तरीके का ऐड करना है, here we have the lasso button, and even you can just use this button to just highlight the values, right? Now here there are no action available here for this, so that's why this is not showing. But even we can just select this again, no action for this. So even we can say add this lasso button too. Right now this is the auto. If you just want this to some other thing, so even we can just add this. I'll go and then I'll select this. Still there are no action on this, but for now I'm just going to use this as auto. Keep this as it is. Then next here we have bubble. अब इसमें bubble का भी आपके पास option है. When you can just set up the bubble too, right? I'll just go click on bubble here, and now we have option to set the bubble size. So right now this is auto here, but again here even we can just change this magnitude, then data range here, or even we can just keep this as auto, right? यदि हमें इसको manually increase करना है, then even we can just increase the bubble size manually here, right? यदि इसका हमें color change करना है, then even we can just give it color. Or what we can do here, even we can just use the function, right, to just show that. Even for certain country, if we have to show this, then we can just do that. Suppose here we have the first country and all. I'll just click here and then here we have the financial data. I'll go and then I'll pick the sales here, right? So I'll just say the sum of sales, and even we can just, instead of this, we can just pick average and all, right? So average of sales is greater than or equal to certain percent. I'll just say 20% or 10%, right? And less than 90%, right? So the number would be, so here I'll just going to populate this as a number, and then their value I'll just show this color here. I'll click OK, and now this will be shown as per this, right? इसका color इस तरीके से change हो जाएगा. So even we can just apply here the conditional formatting too. Again, I'll just go here and then I'll change this.
So यहाँ पे हमें conditional formatting लगाना है इस तरीके से, so that this should pick the value accordingly. I'll just pick the sales here. Sales पे हमने sum of sales डाला, then value is greater than 0. Number I'll pick here and I'll say 5,000. Say, and then I'll say that, and I'll click OK. So here it has applied. Okay, so in this way even we can just apply the conditional formatting for this also, right? So average is 24.13 K, profit का है, sales is something 118 million है, so this is something bigger one, that's why this is not applying on this. So इसमें हम number के according ही इसको हम apply कर सकते हैं, right? So even we can conditionally we can just change its color too, right? And here we have the option. Then next here we category level and heat map, right? So as per our requirement we can just populate here heat map. I'll just click here, and यदि हमें heat map पे color एक certain color पे populate करना है, so even we can just do that too. So here we have the option and then we can populate in it, right? But for now, because here I'm just showing the bubbles, so I'll just keep this as bubble instead of heat map, and that's it. So this is the way what we can do. We can just even the perform formatting simple हम इसमें chart create कर सकते हैं, and then we can add the interactivity using drill through option, right? And also we can create multiple chart in same page, and then we can just edit the interaction in Power BI so that we can just control the communication between these available charts here, right? Suppose अब हम जो पेज है पेज 1 है, आई जस्ट वांट दैट इस पेज पे हमें सर्टेन कंट्री का डेटा ही शो करना है, सारे के सारे कंट्री का डेटा नहीं शो करना है, आई जस्ट वांटेड टू शो द सर्टेन कंट्री डेटा। तो फिर हम कैसे फिल्टर लगाएंगे? और इस पे हम ये फिल्टर लगा भी सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं कि हमें इस वाले पेज पे जो शो करना है एक सर्टेन कंट्री का ही डेटा सिर्फ शो करना है, सारे के सारे कंट्री का नहीं शो करना है। So is it possible? Is it doable or not? ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं guys? Nanda Kumar, can we do this? Is it doable or not? So what I want, I just want that in this page, I would just the data would be populated only for Canada country, right? Not others. So is it possible? It is possible. How we'll do that? In this table you were saying. So this table. Yeah, we can filter by, we can use that filter On this page, right? So I'll just Yeah. move this here, right? And from here, even we can just filter out. Suppose I just wanted to show the data for Canada one. So I'll just do that. I'll select here, and now you can just see, so here in this space, all the data what we are seeing, that is only for Canada or nothing, right? Suppose I just want only for certain country, right? So I'll just do that. Now here you can see, this is just showing for that certain country here, right? एंड इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इवन वी कैन कंट्रोल द डेटा फ्लो ऑन सर्टेन डैशबोर्ड, राइट? एक सर्टेन डैशबोर्ड हम क्रिएट कर रहे हैं, उसमें हम चाह रहे हैं कि एक सर्टेन कंट्री का ही सिर्फ डेटा जाए, सारे के सारे डेटा उसमें ना जाए, राइट? सो इवन वी कैन जस्ट डू दैट। सिमिलरली व्हाट आई विल डू, आई जस्ट गो हियर एंड देन आई क्रिएट अ बिग डेटा कार्ड। बिग डेटा कार्ड पे हम यहाँ पे नंबर डालेंगे टोटल सेल्स। सो नाउ दिस विल जस्ट शो ओनली अस, जो हमने कंट्री सिलेक्ट किया हुआ है उसी का ये टोटल सेल्स हमें शो करेगा, और सबका नहीं करेगा। सो दिस इज राइट नाउ वी हैव जस्ट सिलेक्टेड हियर जर्मनी, सो दिस इज शोइंग द टोटल सेल्स फॉर जर्मनी हियर, राइट? सिमिलरली यदि हम इसमें जाएंगे एंड देन अगेन आई गो एंड चेंज दिस वन, राइट? इसको हम जर्मनी से हम इसमें यहाँ पे ले लेंगे कनाडा वन। सो नाउ दिस विल जस्ट शो द डेटा फॉर कनाडा वन, राइट? फ्रांस लेते हैं, then this will just show the sum of France and Canada in this way. So here we have the basic filtering. Next here we have the advanced filtering one. I just click on advanced filtering. Then
again here we can just apply a rule, right? So if I just say that it's show item when the value is France here, right? And if we have to apply any other filter also, then even we can just do that, right? So I just say that does not contain start with, does not start with, and all. So here we have different options available. Even if we see that there are some item is blank or there are some value is missing or anything else, then even we can just use these options available, right? So does not contain start with, does not start with, or contains, right? Even we can just add more filter here. So right now we are saying that country is France, और यदि इसमें हमें एक और country का add करना है, और I just wanted to add that this start with something else and all. So even we can just do that too here, right? But for now I'm not going to apply this advanced filtering one, right? I'm just going to just use the simple filtering here, right? अब इसमें से हम if we just remove the these filters from here, right? So अब हमें यहाँ पे पूरे सारे countries जितने भी हैं सबका data यहाँ पे दिख रहा है, right? Similarly, if you just wanted to see the some particular segments data only, then even we can just apply the filter here, right? So here we have different filtering option on this visual, right? यदि हमें visual level, certain visual level जो हमने visual select किया हुआ है, सिर्फ इसी visual पे हमें कोई filter apply करना है, नहीं कि एक certain visual है उसमें हम चाहते हैं कि इसमें जो data जा रहा है वहां पे हम filter लगा दें flow, right? So even we can just do this from here, right? At certain visual level we can just apply the filtering one, और एक certain page level पे यदि हमें लगाना है, then even we can just add the filter on, add filter on this page here, एंड यहाँ पे हम यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं. सो दीज आर थिंग्स दैट डेवलपर कैन डू, राइट? एंड यूजर को ये नहीं दिखेगा, राइट? एंड यूजर विल ओनली सी द विजुअलाइजेशन, राइट? एंड जिस यदि हमें हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें चार्ट्स जो क्रिएट करना है या डैशबोर्ड जो क्रिएट करना है फॉर डिफरेंट कंट्रीज, राइट? हर एक कंट्री के लिए अलग अलग हमें डैशबोर्ड create करना है. So in that case what we can do, we can just use the this option, right? Filter on this page, and then जिस पेज पे हमें जिस कंट्री के डेटा को पिक करना है we can just do that here, right? Similarly next type of filter here we have, that is filters on all page. Suppose इस पूरे डेटा सेट जितने भी हम यहाँ पे पेजेस क्रिएट करेंगे, in all page I just want that certain item no. Suppose I just wanted to filter out, right, that एक certain product है, हम उस product को पे उसकी रिपोर्ट हम क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, that is something test one, so I'm not going to include that, right? So I go here and then I'll apply these two products. I'm not going to use these two products on all pages. जैसे हमने इसको हटा दिया, now in all pages यहाँ पे क्रिएट किए ये सारे पेजेस पे ये फिल्टर अप्लाई हो गया है. You can just see that, right? This filtering is applied on all pages, right? So in this way we can just create simple visualization in Power BI, and also we can use the filtering option in it, right? Okay, so that's it for today. This was just a recap. In next class